how we can create a mockup type, like a book type mockup in just Pixelab application. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन इमेज साइज, एंड इमेज साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है यूट्यूब थंबनेल. देन यहाँ पर वी हैव टू ऐड अ शेप लाइक दिस जो थोड़ा सा बुकिश टाइप दिखे, एंड वी हैव टू ऐड एनी कलर वी कैन ऐड ऑन इट. आई वांट टू ऐड अ ग्रे कलर, a dark gray color like this. Now fit it to the middle. इसको अच्छे से अलाइन करके अब टेक्स्ट वाली लेयर को टू फ्रंट कर दो, एंड नाउ वी हैव टू राइट 2K स्पेशल. आपका जो भी मॉकअप पे लिखने का मन है यू कैन राइट दैट, एंड फॉन्ट यू कैन यूज एनी, बट वी विल यूज वेरी सिंपलिस्टिक वन जो कि है पॉपेंस, विच लुक्स वेरी गुड. नाउ यू हैव टू जस्ट गो टू रिलेटिव पोजिशन, एंड यहाँ पे बस ऐसे अलाइन कर दो. देन नाउ 2K स्पेशल को हमें थोड़ा सा ग्रेडियंट करना है लाइक दिस मच, बिकॉज 2K स्पेशल थोड़ा सा हाईलाइट होना चाहिए. टू के स्पेशल फ्री, अनलिमिटेड, इसको भी सेम ऐसे. लाइक दिस, एंड इसका कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि लिटिल ग्रीनिश. एंड ये मैं बहुत मिनिमलिस्ट सा बना रहा हूँ, लाइक इट विल लुक वेरी सिंपल. बस वी हैव टू एडजस्ट इट लाइक दिस. अभी हमारा जो ये वाला है बैकग्राउंड, उसको वी हैव टू एडजस्ट बिकॉज साइज शुड मैच. उसको टू फ्रंट पे लाके ऐसा टू बैक कर दो. नाउ सेट इट्स रिलेटिव पोजिशन. बैक टू द बेसिक्स. नाउ इतना करने के बाद यू कैन ऐड सम मोर एलिमेंट्स. लाइक दिस, एंड इसको भी अच्छे से फिट कर सकते हो. आई थिंक इट विल लुक वेरी मेसी. उसको लिए दिया टू जस्ट एडजस्ट इट अ लिटिल बिट. लाइक दिस. This way we can. Okay, all good. Now you have to merge them all, like in this scale, and we have to just go to the 3D shape option and then 3D rotate. Now you have to just use the 3D shape option, increase the depth, and एक second, increase the oblique also, and your rotation should be like this. You can choose the color. Just choose a little light color from your book, like from your book's cover. ठीक है.
and then we have to just, what's wrong भाई, इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? Yeah, just like this. Now we have to where is 3D rotate, I think. Increase the light angles like this. Now you are good to go. Add a rectangle over there and फिर से इन दोनों को merge करो like this. After getting merged, you can add emboss. So sorry but emboss work नहीं कर रहा, so I don't know, शायद ऐप का ही कुछ प्रॉब्लम है. Can do this 3D rotation with 3D shape option. Now I think you can use this as a mockup. Like this is very basic idea. Pixelab में आप किस तरीके से ऐसे create कर सकते हो अपना खुद का mockup. And बाकी that's all for today. Thank you so much for watching this one. मैं मिलता हूँ आपसे next video में, तब तक के लिए bye bye.